Sharyar ने बहुत अच्छा point बोला कि who else if not Sharyar, because I Who also else? realized that alhamdulillah we've been doing this show for many days now, तो अब तो I hope the listeners know कि जब kick-off 4 बजे आ रहा है तो ये कौन 3 fanboys है. कौन तीन है? Absolutely. And again fanboys का term आ गया है, तो I think it's time to be the typical fanboys of football. क्या games हुए हैं कल, क्या game games भाई. हुए हैं. Before we get into all the games Sure, and sure. tactical Yeah. and analysis Yeah. and all that Yeah. banter, यार कल स्पीकिंग ऑफ नेम्स राइट आपने Right. नेम्स हमारे नेम्स की बात की Right. कल एक नाम पे बात हो रही थी, मुझे एक समझ आ गया. क्रोएशियन नेम पे बात हो बिल्कुल. रही थी और किसी ने ऑनलाइन यू नो लाइक ऑन द इस show पे and इस the- शो yeah, पे yeah, yeah. बोला था कि अगर क्रोएशिया जीत गई तो मैं लूका मॉड्रिच बोलूंगा इंस्टेड ऑफ फ्लूका मॉड्रिच. बल्कि इसमें मैं ऐड करना कौन था ये? चाहूंगा I don't कि know. मैं ऐड I don't करना know. चाहूंगा शरियर, इसमें होगा सर लूका मॉड्रिच. सर होना चाहिए. ठीक है, और यहाँ Yeah. टू आवर लिसनर्स ऑन 89 यू नो हु हैवंट सीन दिस ये बात नहीं मोमेंट, हुई थी, तो okay? डीएन स्पोर्ट के आप YouTube Facebook पे जा सकते हैं. कल की जो हमारी एपिसोड थी Yeah. उसमें मुझे अभी भी याद है दोनों ने हाथ मिलाया था मेरे भाइयों ने और डील ये बनी थी. ओसामा, द क्वेश्चन इज नाउ टुवर्ड्स यू. You committed yesterday and you said कि अगर क्रोएशिया जीत जाता है, I understand 1-1, you know, tough game, penalties तक गया, penalties पे you know क्रोएशिया and Modric won 3-1. बात जीतने पे हुई थी. जीतने पे हुई थी, Right? exactly. What do we call him now? Is it I finally? call him Luka Modric. Amazing. Hey! ये मुझे लगता है मॉड्रिच को बैलन डोर से ज्यादा खुशी इस बात पे अभी हो रही होगी कि ओसामा ने उनका नाम सही ले लिया है. ठीक है, तो आई थिंक ये तो एस्टैब्लिश हमने कर लिया. Yeah. बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मॉड्रिच एंड क्रोएशिया, आई थिंक लेट्स डाइव स्ट्रेट इनटू दैट गेम. What a beautiful game. What The a reason game, why what a I'm game. using this statement, what a beautiful game, is because Japan ने फिर से दिखाया, I know they lost, but I feel like उन्होंने फिर से दिखाया कि जर्मनी और स्पेन के साथ उनके जो मुकाबले थे उसके बाद क्रोएशिया को भी उन्होंने, of course I felt like Tough कि they time. could have done better. Yeah, जहाँ पर of उनके course, previous of games course. को हम, you know, if we take Yeah. those into account, but the way they played, they took Croatia till the penalties. Till the very From end. my end, it was a good game on Japan's, you know, end, but could be better. Yeah. The effort was there. Basically, this game was all about experience and inexperience, right? Japan की high press, energetic game जिसकी वजह से इन लोगों ने, let's not forget, Germany and Spain को हराया है. So they continue with the same plan and but Croatia was too experienced. Yeah. Shahir, ये जो मैं आपने, तो हाँ. I just wanted to add one thing कि मैं expect कर रहा था actually just this कि Germany and Spain को हरा के जो जापान आए हैं यहाँ तक, they would have that Some more in them. Some more Yeah, fight in them. some Yeah, more I agree. fight in I them. agree. वो penalties तक गया, it didn't work out for Japan that well. Although I would say Japan played exceptional football yesterday. Exceptional football, man. क्या attacks बनाते जा रहे थे. I feel like Croatia was a little bit broken up. They were. But after their first goal, They picked up the pace. equalizer, they picked up the pace. I agree, I And agree. they had to back it up. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, देन ऑफ कोर्स वन फुटबॉल रिलेटेड वन, द फर्स्ट वन इज नॉट सो फुटबॉल रिलेटेड, बट आपको पता है कल भी जापानीज फैंस ने हारने के बावजूद वर्ल्ड कप से निकलने के बाद पूरा स्टेडियम साफ किया है. Wow. Even yesterday. So again, it was not just Yeah. for the cameras. Yeah, It is yeah. something that they abide by. So I was really impressed by the fans particularly. That's commendable. Yeah. और ये जो शरियार आपने बात जो आपने कल के शो में भी एक्चुअली की थी, you said it would be a game between an experienced side and a relatively, you know, new emerging side. ये जो है ना, ये I think this could establish and sort of conclude the conversation around this game. I'll tell you why. I feel like कि वो नजर आया till the end of the game. Yeah. कहाँ पर क्रोएशिया का एक्सपीरियंस काम आया और नजर आया, that was in the Penalties. penalties. Absolutely. Yeah. You saw that the Japanese players were taking penalties as if उनको, I don't want to say practice नहीं है, they're, you know, international footballers, obviously they know way a lot more than us, but at the same time compared to Croatia, their penalties were not up to the mark. Croatian penalties were like spot on. Yeah, they weren't. I don't think they've ever experienced such pressure cooker situations. I you know, absolutely agree. which I the absolutely Croatian agree. players have in Yeah. Champions League Yeah. football, or European football, or international football, or last two And this World is Cup. where- And Well- Ibad's right here when he says that I don't want to say the same thing कि वो Japan के players जो हैं, they were, you know, not hitting the ball correctly. I don't want to sound like that, but they actually weren't. Yeah, I feel like they just made Could bad have done penalties. better. Could have done better. Absolutely. I wouldn't They want were to very hit below really average. bad Yeah, I penalties, absolutely agree. yeah. And you know, and I feel like Croatian keeper ने उसको एक हद तक इतना सेलिब्रेट भी नहीं किया क्योंकि उसको खुद भी थोड़ा आइडिया था कि ये पेनल्टीज इतनी अच्छी नहीं है, बस ये मैं रोक लूंगा. But anyway, ये तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया that Luka Modric is now Luka Modric for Osama, no more Fluka. Please. But let's discuss the बाकी जो हमारे बड़े interesting games हैं, especially मेरी team Brazil वाला. Sharyar and Osama, I believe we should get right into the conversation should. about Japan and Croatia.
किया. एक जो अगेन मैं अपनी छोटी बहन के साथ मैचेस देखता हूँ Yeah. तो वो मैंने आई थिंक एक सेगमेंट बना दिया है, लिटिल सिस्टर क्वेश्चंस. एक और सवाल था उनका बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैंने तो अपना जवाब दे दिया. I'll post that here. वो कह रही थी कि कल ऐसा हो सकता है कि जापान थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अंडर पावर्ड था, दैट्स बिकॉज ऑफ देयर हाइट. वो मुझसे पूछ रही थी कि बड़े हेडर्स वगैरह आ रहे थे, मुझे कहती हैं कि ये मतलब इज इट बिकॉज वो थोड़े छोटे हाइट. बड़ा बड़ा इनोसेंट सा सवाल था, बट आई डू थिंक दैट डज हैव सम फैक्टर टू प्ले बिकॉज उनका एक डिफेंडर जो उनका कैप्टन है, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम. Yoshida. यस, आई जस्ट नो कि हर नाम में किम जरूर आना है. वो कल एक कमेंटेटर ने भी बोल दिया, वो हंस पड़ा कमेंटेटर इंटरनेशनली. या सो डू यू गाइस थिंक दैट्स समथिंग, सम फैक्टर? I don't think so, because if that were the case, they never wouldn't beaten Germany, Spain. Germany, especially Germany. Yeah. Spain में भी बहुत diminutive, short-heighted players हैं, but they beat Germany. Yeah, that's true. Rudiger, bro. Yeah. How do you even? I think that they're big people. somehow comes into play. Modern these football में I heights disagree. and everything. I disagree. I feel like that comes into play in the sense where अब ऐसे अगर पेनल्टीज आ गई हैं, ठीक है, आपका गोलकीपर है. If you have a tall goalkeeper who has enough reach Who as well. can act big at least for the. So that does help in some sorts. From a layman's point of view. From a layman's, from a fanboy's point of view, I would say. Yeah. Agreed. So on the other hand, if you Courtois. saw the Yeah, Japanese absolutely. goalkeeper, उसने अगर जब डाइव लगाने की कोशिश भी की, थोड़ा सेव करने की कोशिश की पेनल्टीज में, he was way off the ball. काफी दूर था उससे. उसकी judgment अच्छी नहीं थी यार. Because but that's again down to inexperience. That's another factor. You know? That's another I factor. feel like yesterday I was also discussing with my friends. I feel like the Japanese national team prepared for everything but penalties. Yeah. This is what I feel like. Absolutely. I agree. उनको Very शायद true. आइडिया नहीं था कि शायद कोई पेनल्टी तक भी पहुंच सकता. उनको था कि जर्मनी स्पेन हो गए तो ये तो क्रोएशिया तो कुछ भी नहीं होगा. बट क्रोएशिया को यहाँ पर हमें क्रेडिट देना चाहिए. मॉड्रिच जिनका अब ऑफिशियली नाम पेरिसिच. What a goal! What a finish! What a header! What a header and what बहुत a finish. अच्छा man. I was stunned. It was an amazing play. Yeah. कहाँ से बॉल क्रॉस की गई है, Absolutely. उसका बॉल का पेस था Yep. उसके ऊपर, he just flicked it into the corner. Yeah. और वो हेडर मारना आसान नहीं है इतने डिस्टेंस से, इतना प्लेस करके. Listen, if you're playing for a coach like Antonio Conte in your club career, right? He plays for Tottenham. Perisic recently moved to Perisic. If you remember, a couple of years ago, जब Jose Mourinho था at Manchester United before Solskjaer was booted out, so he really wanted Perisic. Mourinho really wanted Perisic because he knew Italian football. Also, Perisic भी Inter Milan में था, so he knew कि this guy is class. Yeah. अभी 2 साल बाद वो आया है and in the Premier League and he's been absolutely class यार. I will actually add on to this point. I feel like जो Spurs के players हैं in the World Cup, they're really performing. They are. Yeah, and अभी भी जो Bentancur, बिल्कुल the exactly. boy. और एक जो यहाँ important point हमें as fan boys note करना चाहिए वो ये है because मेरी यूनाइटेड टीम है, आपकी लिवरपूल है, हम दोनों की स्पेशली उसामा की ला लीगा में आ जाती है, बट हम दोनों की जो है because वो प्रीमियर लीग उसामा की कौन सी है? उसामा की बारसा? बारसा बट आई थिंक मेसी चला गया तो पीएसजी और PSG बारसा में मिक्स करते हैं बारसा दोनों ही हैं, Yeah, समझो. कभी फ्राइडे वाले दिन पीएसजी की शर्ट, थर्सडे वाले दिन बारसा की, जैसे मैं करता हूँ शो पे इनको तंग करने के लिए मेसी की शर्ट के साथ. बट आई थिंक कि यहाँ पर प्रीमियर लीग को भी क्रेडिट देना चाहिए. जिस तरीके का फुटबॉल क्वालिटी ऑफ फुटबॉल प्रीमियर लीग में अब चल रहा है, उनके प्लेयर्स का नजर आ रहा है इन द वर्ल्ड कप. Not ये just तो the हम हमेशा ही players, कहते हैं, right? but quality managers. man. Absolutely. You've got Yeah. Klopp, Yeah. Guardiola, you've got Agreed. Exactly. Conte, Yeah, you've got absolutely. तो all of the Van Hal तो नहीं है, but यार कौन है? Ten Hag. ज़्यादा competitive league है ना, Absolutely. No, तो absolutely competition brings out the best in people. And Yeah. if you're playing for quality managers, Yeah. you will eventually learn something. Absolutely. आपकी improve Exactly. होगी, So yeah. पेनल्टीज पे जो हमने देखा 3-1 क्रोएशिया वन, बड़े वो आराम से जीत गए अगेन. जो क्रोएशियन कीपर तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मैं उनको देख रहा था, वो पहली दो सेव तो उन्होंने सेलिब्रेट भी नहीं की. Yeah. वो ऐसे खुद सोचा था, अरे ये तो गरम में था हाँ, वो तो कहता है ये तो like, वो सोच रहा होगा, ये तो प्रैक्टिस में मैं रोक लेता Practice में हूँ. ठीक करता है, बट जस्ट फॉर लिसनर्स ऑन 89 एंड आवर व्यूअर्स ऑन DN स्पोर्ट, this is what हमारे प्रोड्यूसर हमें ये फैक्ट्स देते हैं, सो वी वुड लाइक टू कॉल दिस द डिड यू नो सेगमेंट. बट इसमें मैं थोड़ा पेनल्टी, पहली टूर्नामेंट की पेनल्टी कल हुई है, पेनल्टी शूट आउट बिटवीन क्रोएशिया एंड जापान. बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैं आप लोग को एक फैक्टर बताता हूँ. Penalty shootouts were first introduced in 1970. Before this, they usually replayed matches that were drawn again and again until one winner was found. What? That and a few other rules that were time consuming, so they introduced the penalty shootout so they could have one winner at the end of a knockout match. Ye आखिरी चीज सुने. Another way of getting a winner out of a drawback in history was to toss a coin.
अब आप मुझे बताओ VAR को जो हम कहते हैं भाई, पहले का जमाना तो देखो हम कहाँ से कहाँ आ गए, अब तो Coin toss फुटबॉलों के अंदर टेक्नोलॉजी हो रही मतलब है। ये लोग लिटरली हेड टेल करते थे हेड कि टेल होता कौन था, जीतेगा। रॉक पेपर सीजर होता था, जो कौन भी। जीतेगा, किसकी किस्मत है, जो जिसकी किस्मत है वो जीत जाएगा। No, You played well, that's but- super interesting. You know, that's Wow. super interesting. हम our generation of fanboys, we are used to, हम पेनल्टी हमारी बड़ी नॉर्मल चीज है, बट आप सोचो जो अगर कोई उस टाइम का कोई फैन तो देखा मतलब कल के मैच में अगर पेनल्टी शूटआउट्स इन्वेंट ही नहीं हुए होते, कॉइन जा रहा हो तो Coin कब होता, तक चलता बिल्कुल, मैच? Rock, paper, scissor होता रॉक है। पेपर सीजर होता है, जापानीज अपना लूडो खिला रहा होता है, क्रोएशियन अपना बोर्ड गेम खिला रहा होता है, नो बट या ऑफ कोर्स ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। एंड देन ऑफ कोर्स फेमसली वन ऑफ द सेमीफाइनल्स ऑफ द 1968 यूरोस वाज डिटरमिन्ड बाय अ कॉइन टॉस व्हिच सॉ इवेंचुअल चैंपियंस इटली प्रोग्रेस आफ्टर प्लेइंग आउट अ गोललेस ड्रॉ अगेंस्ट दैट टाइम सोवियत यूनियन। That's सोचो ridiculous. सोचो, Wow. ऐसा लिटरली लग रहा है गली क्रिकेट का माहौल होता था, हाँ। किसकी पहली बैटिंग है, हेड जिसका आया उसकी बैटिंग है, बट नो शो कह अगेन रहे पुकम पे नहीं की यार, पुकम कर लेते हैं। exactly. So of course, again, Wow. because we have the other game, जो कि मैं कहूँगा मेरी टीम का गेम, और मैं ओसामा को देख के कहूँगा क्योंकि कल के शो में ये कह रहे थे ब्राजील कहाँ है, यार, where मैं is बात Brazil, के लिए- where is और Brazil? मैंने भी क्या बोला था? आपने बोला था आ जाएगी, This is the game. this is the मैं game. बात के लिए ना क्लैपिंग कर रहा हूँ, Thank you, टीम के लिए thank you, क्लैपिंग कर रहा हूँ thank you, कि Sama, thank you. फाइनली उन लोगों ने परफॉर्म कर दिया। और इबाद perform- जब से आया है सुबह, इबाद has been I've been smiling. Ear to ear Yeah, smile है। absolutely. Because man, not बनती है। उन्होंने सिर्फ बनती अच्छा है। नहीं खेला, उन्होंने ऐसा खेला कि साउथ कोरिया ने बोला अल्लाह माफ करे हम आए क्यों इस टूर्नामेंट They में, were toying with them. ऐसा खेला. But anyway, I Yeah. think we must discuss Brazil versus South Korea in rather much more detail. Yeah. But let's do You'd that. like that. I would love that, but let's do that. This is Brazil. I really couldn't control my excitement anymore, guys. I'm really sorry. मैं जो That's था बस fine. ये मैं कहीं निकाल दूं तो मैंने अभी निकाल दी. निकाल दिया? नहीं नहीं, आपको अभी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू उसामा, बहुत थैंक बहुत यू उसामा ने मुबारक मुझे हो। पहली दफा मुबारकबाद दी है भाई इस Thank you, टूर्नामेंट thank में you. किसी वजह से। थैंक यू उसामा, थैंक यू मेसी के अलावा और भी कोई कुछ कर रहा है इस टूर्नामेंट में, क्या बात है। Thank you to your team for actually performing in a match. Yeah, I think Oh, wow. I would say. Neymar's back. Brazil Neymar's got back. back. In the groove. Absolutely, They are I agree. they were literally in the I groove. agree. Yeah. Goal score कर रहे थे and then they were just like samba कर रहे थे. डांसिंग, मैनेजर को साइड पे ले जाके सटल डांस, और आई एम आल्सो अ ह्यूज फैन ऑफ डांसिंग, तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था कल ये पूरा Yeah. मैच देख के। बट अगेन टू आवर लिसनर्स ऑन 89, आई वुड अगर आप लोग इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनना चाहते हैं या कोई भी अगर ब्राजीलियन सपोर्टर्स हैं और अपनी एक्साइटमेंट दिखाना चाहते हैं, सो प्लीज टेक्स्ट अस इन ऑन 8989 और व्हाट्सएप अस ऑन 03142898989। गाइस, सबसे पहले आए थे हम यही बात कर लेते हैं कि नेमार केम बैक, एक कॉन्फिडेंस, एक Yeah. पॉजिटिव एटीट्यूड आया पूरी टीम में। बिल्कुल बिल्कुल। I think 4 goals coming from 4 different players should establish our conversation Oh, कि they are absolutely. playing as a team. Definitely. Richarlison का जो गोल था, if I'm not mistaken, it was a third goal, sorry. Third goal. Second तो penalty थी नेमार की। जो third goal था Richarlison का, if you guys उसकी आप highlights देखो, man, I was impressed. मतलब क्या बार्सिलोना के टैक्टिक्स होंगे उनके ज़माने में, क्या MSN ने किया होगा जो कल ब्राज़ील ने वो आपस में एक 1-2 करके 3 प्लेयर्स ने, और जिस तरह थियागो सिल्वा ने आखिरी में पास दिया रिचार्डसन को, he बिल्कुल। just placed that in with his left foot. It was beautiful. That's a fact for our listeners and for our viewers on DN Sport. Richarlison has not scored so far in while playing in the EPL, English Premier League, for Tottenham, but I think the guy saved all his goals, his best For the World Cup. For the World Cup. Yeah, and why not? For the biggest stage of them why all. not? Yeah. Why not? And I feel like अब जब वो वर्ल्ड कप के बाद अगेन प्रीमियर लीग में जाता है, Confidence level. कॉन्फिडेंस एंड उसका एक उसका एक प्रेजेंस, एटीट्यूड, एवरीथिंग विल अच्छा, मैटर। Richarlison ऐसा player है कि he thrives on confidence. Yeah. He thrives on love. Yeah. You Yeah. make him feel special and he will do wonders for you. I've- Although I hate him because he's ex-Everton and बड़ा ड्रामेबाज player है, but I hate him. लेकिन he's performing है। क्या goals मार रहा ड्रामेबाज है? तो सारे ब्राजीलियन प्लेयर्स काफी भाई ड्रामेबाज हैं। भाई ड्रामेबाज वो हमें एक अलग ही कहानी है। ऑस्ट्रेलिया को हार के हम नहीं पहुंचे आगे, हमने साउथ कोरिया को हराया है। बड़ी मुश्किल टीम है ऑस्ट्रेलिया, तो बेचारे क्रिकेट के अलावा सुना नहीं था उनका मैंने। नहीं, मगर मैं एक्चुअली बहुत खुश हूँ इस बात के लिए कि एक्चुअली इस टाइप की परफॉर्मेंस आई ब्राज़ील की तरफ से कि दे शोड दैट देयर वर्ल्ड कप टीम, उसमें आज इनके मैच में एक्चुअली फीलिंग आई कि यार they could be a threat in this. It was a mission statement from Brazil. It was a mission I absolutely statement, agree. yeah. आई ऑल्सो फील लाइक, आई नो अगेन वो एक होता है ना कि एक फैमिली में होता है कि बच्चे का एक स्टार भी है तो एक पप्पू आके कहती है डिस्टिंक्शन क्यों नहीं आई, Yeah. तो आई बी दैट पर्सन राइट नाउ, दैट कैरेक्टर। आई फील लाइक ब्राजील की जो टीम थी, इफ यू गाइस नोटिस, पहले हाफ में 4 गोल्स आए, Yeah. दूसरे हाफ में कोई गोल नहीं आया, दूसरे हाफ में साउथ कोरिया का 1 गोल आया, एक व्हिच इज गोल आया। अगेन एन अमेजिंग गोल। Amazing goal, हल्की सी by the way. डिफ्लेक्शन थी, Great हल्की goal. सी डिफ्लेक्शन थी, बट अमेजिंग। Alisson को beat करना is not easy. It's From not very easy. long at all. range. Yeah, Alisson is like solid goalkeeper. But at the same time, I just feel like K
ब्राजील अगर उसको सेकंड हाफ में भी थोड़ा कलेक्टिवली खेलती ना, आई जस्ट फील लाइक एट सम पॉइंट आफ्टर स्कोरिंग 4 goals ऑल ऑफ देम इंडिविजुअली जस्ट वांटेड मोर गोल्स. Yeah. वो टीम प्ले था, बट जब गोल स्कोर करने की अपॉर्चुनिटी थी, हर कोई अपना ही चांस ले रहा था. एवरीबडी वाज टेकिंग शॉट, व्हिच इज फाइन, व्हिच इज ग्रेट. अगेन कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है, गेम चल रहा है, फैंस एंजॉय कर रहे हैं. बट भाई सबको गोल्डन बूट जीतना है ब्रो. फेयर इनफ. बट इधर मैं थोड़ी सी हेल्प भी नहीं, थोड़ी से मैं मोटिवेशन लूंगा इंग्लिश टीम से. इंग्लिश टीम जितने भी गोल कर ले, आप हैरी केन को देखो, फोर्डन को देखो, बेलिंगम को देखो, वो आगे आगे फिर भी पास को पहले एक नजर डालते हैं कि अच्छा भाई कहीं चांस बन रहा है, चांस क्रिएट हो रहा है. एग्जैक्टली. मैं यहाँ ये बोलूंगा अबाउट द ब्राजील टीम कि मे बी इफ दे कैन जस्ट टेक दैट लर्निंग टू देयर नेक्स्ट गेम्स अगेंस्ट क्रोएशिया एंड देन प्रोबेबली अर्जेंटीना. अगर आपकी नेदरलैंड से जीत जाती है अर्जेंटीना एंड देन बोथ ऑफ देम मीट, देन आई फील लाइक ब्राजील शुड टेक दैट लर्निंग. But I think it's flair है. Brazilian players are all about Brazilian generations. पहले हो रोनाल्डिनियो, रोनाल्डो हो, the original Ronaldo, you know, not the fake one. But fair enough, I'll let that go because Brazil की बात है, I'll let it go. There you go. लेकिन you know, तो they all thrive on flair, on confidence, on skills. Yeah. That is the Brazilian way. Yeah. And Richarlison proved that yesterday. Richarlison ने जो बॉल कंट्रोल की है, जब वो गोल उसके बिल्कुल गोल से पहले जो Ridiculous. amazing. वो मैं I was watching the game, I was like यार ऐसा लग रहा है मुझे बचपन में ब्राजील होती थी ना, जब आते थे रोनाल्डिनियो मैच के बीच में हरकतें करता था, वो हल्का सा मुझे फीलिंग आई. I was like चलो Brazil is back on track. But I'm upset about the second half from Brazil side. Yeah. इसलिए क्योंकि फर्स्ट हाफ में इतना अच्छा खेल के, इतने अच्छे गोल्स मार के, परफॉर्मेंस दिखा के, सेकंड हाफ में एकदम से फिनिशिंग नहीं हो पा रही थी. They made their plays but वो फिनिश नहीं कर पा रहे थे. I actually expected कि सेकंड हाफ में they might just get like a few more goals to their name. तो वही वाली बात है, players were going after their own goals. I agree. उसमें I don't know how what they were thinking at that time, but I think if they made their plays a little more like a team, वो फिनिश हो जाए. I agree with Osama, but क्योंकि ब्राजील मेरी टीम है, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि क्योंकि एशियन टीम सारी बाहर हो गई थी, ब्राजील ने सोचा अब इतना ज्यादा इनको नहीं करते, बेचारे घर भी जाना है, सॉन ने फिर प्रीमियर लीग भी खेलनी है, इजी हो जाते हैं. बट एनीवे, आई नो दैट वी डू हैव टू डिस्कस आज के जो गेम्स हैं. Just one thing. जी, go for before, it. you know, I just like to criticize Brazil on one thing. I think going forward, उनके लिए the only thing they lack in their squad are good fullbacks. They're playing a makeshift fullback in Militao on right back. टेलेस भी चला गया, इंजर हो गया. you know. Alexandro is not the greatest fullback in the world. जिसकी Yeah. जगह लोग डेनिलो को खिला रहे थे. थोड़ी He's सी a अभी right भी back. टेंशन है ब्राजील की टीम में. No, I absolutely So agree. Perisic Yeah. will exploit that. Yeah, no, I agree. And I think we should further dissect this Brazil-Croatian game. Guys, do we have any more amazing things to say about Brazil? Or are we done with that game and we should look forward to the games today? आप लोग बताएं. मैं मुझसे तो कोई पूरा दिन पूछता रहा, मैं बहुत बात करता रहूंगा इसके ऊपर. I think we should move on. We've talked a lot about that. And I think अब आप लोग को वो भी हो रहा है कि नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना वाले जो वो सपोर्टर्स tension हैं, है वो वो अब थोड़े उनका, जेलस हो रहे होंगे ब्राजीलियन सपोर्टर्स से कि इतना अच्छा नहीं, गेम नहीं. खेल दिया, तो चलो मैं जाने देता हूँ ब्राजील की कॉन्वर्सेशन. मैं जेलस नहीं हो रहा. नहीं हो मैं रहे? तो बहुत पहले ही क्वार्टर फाइनल में आ चुका हूं. ओए मैं होए शायद होए. तो पहले अच्छा से आ अच्छा चुका हूं. रिलैक्स Relax बैठे नहीं फेयर एंड दैट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम बाय द वे. Yeah, नेदरलैंड्स will be. अर्जेंटीना. Will be. ब्राजील क्रोएशिया थोड़ा सा ब्राजील की तरफ जाते हुए मुझे नजर आ रहा है, बिकॉज़ क्रोएशिया ने अभी तक इस टूर्नामेंट में कुछ ऐसा किया नहीं. ऐसा किया ही नहीं है. Where I would say They don't have that X factor. Yeah, I absolutely agree. But the games for tonight. They will slow the game down though. Yeah, I absolutely agree. The games today, 8 p.m. Morocco versus Spain, 12 बजे Portugal versus Switzerland. How are we feeling about these games? बड़ी इंटरेस्टिंग. मैं आप लोग को एक फैक्ट दे देता हूँ. पोर्चुगल स्विट्जरलैंड पे ये थोड़ा सा शायद ओसामा को अच्छा लगे क्योंकि अगेंस्ट मेसी वाले फैक्ट, वो सॉरी अगेंस्ट रोनाल्डो वाले फैक्ट्स हैं ये. Why not? Portugal Switzerland, their head-to-head record of 25 matches played. Switzerland have won 11. Whoa. Portugal have won 9 and बाकी जो बचे 5 वो ड्रॉ हुए हैं. Wow. अब आप ये देखो कि अगर हम स्टेटिस्टिकली देखें तो स्विट्जरलैंड हैव अ स्लाइटली बेटर चांस. But at the same time, I just want to say, Portugal has this guy. I knew this flag was going to Our come up. listeners on 89 can't see this, but they can surely go on to DN Sports YouTube and Facebook just to see that एक रोनाल्डो का फ्लैग है यहाँ जो wave कर रहा है. जो वेव कर रहा है क्योंकि आज I know Switzerland का टफ गेम है, but Ronaldo and Portugal are gonna make it through. Yeah. That's my prediction. Achha, well, you know what? An ex-Dutch footballer, Ronald de Boer, Yeah. जो Frank de Boer, which is, you know, that guy is like more renowned, manager of Crystal Palace, got sacked in like, what, 6-7 days, you know. उन्होंने बोला है कि यार, if I were the, you know, manager of Portugal, I would not start Ronaldo. Wow. He's basically said, यार, it's not about only Ronaldo, but it's everything that he brings with him. Because that's the only thing they talk about him. So he's saying, is, you know, if he were the Portugal manager, he would not pick Ronaldo.
अल्लाह का शुक्र है he's not the Portugal Right. Portuguese manager because I think Ronaldo और पूरी Portugal की economy डूब जाती अगर Ronaldo नहीं खेल रहा Ronaldo होता you can't bench Ronaldo वैसे in World Cup. World Cup में it doesn't make sense You for can't. Portugal to bench a player like Ronaldo. Yeah. Exactly. Unless you're It doesn't telling me make कि sense. Ronaldo Portugal के पास एक बैकअप प्लेयर लाइक मेसी क्योंकि रोनाल्डो obviously बेस्ट प्लेयर है बैकअप में चलो मेसी तो अगर Backup उनके के पास लिए Messi Backup में उनके Messi पास है, अगर backup में बैकअप में Messi मेसी रखा जैसा प्लेयर है ठीक है रोनाल्डो रेस्ट कर ले थोड़ी देर लेकिन उसके अलावा तो रोनाल्डो चाहिए आपको वरना जीतेंगे कैसे क्यों सामान वैसे तो मेसी को ही पहले ही खिला लेना चाहिए वैसे तो स्पीचलेस हो गया समझ सामान नहीं है, सामान क्या speechless हो बोलूं गया। इसमें? अगर है तो पहले मेसी को खिला ले Yeah. मगर ये कैसी बात है वैसे ये बड़ी है वैसे हाँ Ronaldo, ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग अजीब फैक्ट बात। है हाँ, ये नहीं- but a lot of people do come out and say this about I Ronaldo don't. they say this See, you know, I'm not a big fan of Ronaldo. I'm not. Right. But that was a stupid thing to say. yeah I agree what's your World Cup- prediction for Portugal Switzerland Oh, yeah, I think Portugal win. tough game though Tough. It'll be a very tough game because I agree Switzerland have been really good. yeah I agree I am really looking forward know? to this game yeah I I totally think agree I'll with go you with the stats as well. Switzerland? मैं कहता हूँ Switzerland Upset जीत होगा ये? जाएगा और पोर्चुगल अगर हार गया तो मैं रोनाल्डो के लिए ना एयरपोर्ट पे जाके ये वाला फ्लैग वेव करूंगा वाह Oh my वाह God. वाह और चलो एक और डील अगर जाते अगर जाते ठीक है ही। फेयर एनफ ये और मैं आपके साथ करूंगा और he ठीक है? करेगा honor. ठीक- He's- हाँ, he's an ठीक है। honorable Yes, guy. he ठीक is है। बट अगर पोर्चुगल आज क्वालिफाई कर जाती है तो कल के शो में ओसामा ये फ्लैग पकड़ के ऐसे वेव Oh my करेगा ठीक है God. बीइंग अ मेसी फैन ये डिसाइडेड हो गया And this will be on internet. Yes, Okay. absolutely. Forever. So this is Let's do decided, this, Osama. let's No, do but this. how are we feeling about the Morocco Spain? Osama ने बड़ा अच्छा point बोला यहाँ पर. Apart from rooting for Portugal, I feel like the Swiss do have a chance. Yeah. I think it's going to be a They tough game. do. But मेरा upset जो Absolutely. मैं predict कर रहा हूँ upset would be the Morocco Spain game. You're betting an upset. I don't know why I'm getting a gut feeling even though my producer is looking at me right now कि भाई मैं Spanish supporter हूँ आप Yeah, मुझे ऐसे man. कैसे बात कर सकते हो वो day one से कह रही है कि Spain जीतेगा लेकिन I feel like Morocco might just do an upset today. nah I have a Nah, gut I don't feeling. think so. I have a gut. I could be Nah. wrong. I'm probably wrong. और पता है क्या? It'll be a very interesting. बड़ा मजे के लाइनें हो गए matches. If Portugal and Spain win tonight, Yeah. it'll be a Spain-Portugal quarterfinal. And That's that gonna would be insane. so interesting. अभी तक के Explosive match. explosive. अभी तक के Explosive. जो हमारे quarter final है that's Croatia Brazil. Friday 9 December 8 p.m. Saturday 10 December 12 a.m. we have Netherlands that is your team, Shariar's team and Argentina, Osama's team. Then जो हमारा Saturday 10 December 8 p.m. का जो fixture है वो आज के matches पे depend करता है. Like you said, probably let's see Portugal, Spain or something. And then जो हमारा आखिरी quarter final है that is Sunday 11 December England versus France. क्या matches क्या हैं यार. मैचेस लाइनअप हो गए आई थिंक सडनली Quarterfinals तो एकदम बहुत बड़े एब्सोल्युटली matches और हो आप ये गए। देखो ये बड़ी बड़ी टीम्स आपस में खेल रही है तो नाउ यू डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट कि आगे सेमीज में Yeah. कौन आएगा You can't predict. You हाँ, can't हमने predict. not predict. हमने अंडरडॉग्स के साथ ही देख लिया कि कैसे कैसी चीजें हो गई Yeah. so एग्जैक्टली you don't know Yeah. what the big teams are going to Yeah. do और now. अब पता है क्या? अब round of 16 में they'll be playing extra time अगर जाता है जैसे कल course. रात के मैच में गया. Of course. you know? तो that'll also have an impact on players का stamina, their Yeah. performances. और going अभी तो forward. वैसे ही So- हमने आते आते देखा ही था कि स्टॉपेज टाइम Injuries में भी सकती गोल्स हैं. भी हो रहे थे तो अब उसमें किस तरह से इम्पैक्ट आता है क्या होगा Injuries might Yeah. also play a hand. नहीं, Definitely, yeah, definitely, बहुत से injuries ऐसे तो फैक्टर्स हैं होंगी। yeah, I absolutely agree but at the same time I think आज के जो गेम्स हैं as fanboys as fans of the game I feel like obviously quarter final semis की तो एक्साइटमेंट होती है but आज की मुझे बहुत एक्साइटमेंट है क्योंकि आपके पास एक quarter finals की एक शक्ल आ जाएगी you Yeah. know कि अच्छा अब semis सब। में कौन खेल सकते हैं अभी जो प्रेडिक्शन हो रही है वो ये भी हो रही है Brazil versus Argentina might just be a semi final that Osama we have to Yeah. watch together if Of that course, of happens That'll be and the that'll be match of the tournament. agreed फाइनल से बड़ा मैच होगा. बिल्कुल Let me बिल्कुल just put it बिल्कुल like ऐसा that. ही है एक तरफ आपका मेसी एक तरफ आपका पूरा ब्राजील इट्स गोना बी अमेजिंग आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट Messi and Neymar, huh? Yeah, exactly. course. But अभी तक हमारी predictions का round up कर देते हैं then of course we'll have to end the show. You said that Portugal and Swiss में you're predicting Portugal. I want Switzerland to win, but I think prediction- Portugal will win it. Fair enough. Same. I don't want Switzerland to win, but prediction is Portugal. Osama आपने बोला I want upset हो सकता है Switzerland to यार. win Fair enough. and I hope they do. Fair enough. और I hope ये नहीं हुआ ऐसा ये जो फिस्ट बम्प हुआ है. But मोरक्को और स्पेन में आप दोनों कह रहे हो स्पेन. Yeah. Yeah. मैं कह रहा हूँ मोरक्को मैं अपने आप को फिस्ट बम्प दे देता हूँ इस बात पे कि मैंने मोरक्को कह दिया ठीक है जी but I think for today for now let's end the show Yeah. but we will catch you our listeners on 89 tomorrow at 4 p.m. This is Kickoff. I am Ibad Ali Shah I am Shayar Khurram. And I am Osama Rashid and we are the Fanboys. Signing out.